Hello everyone and welcome to PendulumEdu, and here in this session for vocabulary we are going to discuss another set of words with you. Now these set of words are primarily and the ones from these articles that we've been discussing with you from the Hindu. Now why are these articles important? I have told you numerous times by now that I would say the verbal ability section, or you can say the reading ability section in your competitive exams like RCs, close passages, parajumbles, they are majorly from this particular article. The error detections, the sentence improvement, all of this. So the set of the words you're supposed to know. The reason is that to easily understand or to easily comprehend the text given, you need to know the words well. So let's begin with the discussion for today, and if you haven't subscribed to the channel yet, do subscribe it right away. Let's begin with the session. It says, the article for today heads as long haul ahead on demand supportive fiscal policies. Long haul ahead, which means abhi, like moving ahead in the coming time. There's a long haul, like force to move ahead. Okay, एक तरीके का जो थी haul here is used as a noun. It can also be used as a verb, which means to give or to force something, okay, to move. Here haul is that there's a force to move ahead. Okay, on demand supportive fiscal policies. When we say fiscal policies, fiscal here is used as an adjective which is qualifying the noun subject policies. Fiscal policy. Now fiscal is qualifying policy. What kind of policy? It is related to government and it is a money matters. So it is monetary policies, you can say. एक तरीके से जो वित्तीय वर्ड हिंदी में हम यूज़ करते हैं वो फिस्कल के लिए. तो जो फिस्कल पॉलिसीज़ हैं, हमें ऑन डिमांड वी नीड सपोर्टिव फिस्कल पॉलिसीज़. लाइक सपोर्टिव फिस्कल पॉलिसी व्हेन आई टॉक अबाउट or the author means to state here, right, that the country or our nation needs this, and we need stable and supportive fiscal policies which can help our nation to move ahead, to step ahead. Demand supportive fiscal policies. When I say demand supportive, which means whatever the need is of the country, whatever the country or the nation needs at present, the fiscal policy should be based on that. They should be supporting those particular demands. Alone can end the lockdown induced slowdown. जो लॉकडाउन के वजह से जो स्लो डाउन हो गया है, सिर्फ डिमांड सपोर्टेड जो ज़रूरी है अभी वैसी फिजिकल पॉलिसीज़ अगर आती है तो ही हम इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं, तो ही हम ये जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है इससे उभर पाएंगे और इसको हम ख़त्म कर पाएंगे. Factory output continued to contract in July, albeit that is you can say it's again vocabulary word for you, though it's an alien word. It means it's a foreign expression. It's of Greek origin, but it means although. Okay, and now you might have seen in many of the comprehensions or the articles that instead of although they use albeit. Now albeit marginally slower than in June, reflecting the depressed economic conditions as the pandemic rages on, as it surges on, like it increases with, like the force or the anger increases. So जो intensity है pandemic की वो बढ़ चुकी है. That is why. Okay. Quick estimates for the IIP show output across the three sectoral components of the index, that is mining, manufacturing and electricity. These three sectoral components all shrank, which means all dropped. Now shrank is third form for shrink, dragging the overall index to a 10.4% year-on-year contraction.
While this is slower than June's 15.8 shrinkage, a closer look reveals. Now, reveal is a verb. Okay, it's a verb. I'll wipe off the screen and explain you the word. So, reveal is a verb which means to show. Okay, or to express out. जैसे कि किसी चीज़ को प्रकट कर देना. Okay, या प्रत्यक्ष लाना, सामने ले आना. So it reveals that the rebound in momentum. Rebound is also, here it's, rebound is used as a noun, which means the act of moving or retaliating, okay, moving back. कोई action आगे बढ़ रहा है, तुरंत ही, जैसे spring होती है ना, आप उसको press करते हैं, rebounds, okay? So that the rebound in momentum witnessed in the fiscal first quarters last month, when the economy reopened and the contraction narrowed sharply from May's 33.9% fall, has dissipated appreciably. Dissipated appreciably ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो disappear हो गया है. It has disappeared. एक तरीके से गायब होना. Okay, so dissipated appreciably. Now they're saying that the this shrinkage that we have witnessed in the rebound in momentum that we have witnessed in the first quarter last month, अभी अगर मई से कंपेयर करते हैं तो मई में कितना था? 33.9% fall has dissipated appreciably. अब वो चीज़ गायब हो चुकी है. The most telltale sign of this flattening. Telltale here is used as an adjective. Telltale एक noun भी होता है. Noun के तौर पर telltale is चुगलखोर, और वही चीज़ यहाँ पर है. Telltale is used as an adjective which means that tells or that denotes something. Okay, denotes. Okay, किसी चीज़ को आपके सामने लाना, कोई बात को दर्शाना या बताना या जताना. So telltale sign क्या है? Flattening का is more than the half pace of the growth in the solitary use base industrial activity of the IIP's 6 product groups in which output had turned positive in June. सिर्फ 6 प्रोडक्ट ग्रुप्स हैं जिनमें कि आउटपुट पॉजिटिव रहा है जून में, बाकी सब नहीं. और जो ग्रोथ का पेस है वो ऑलमोस्ट आधा हो चुका है. ओके, सॉलिटरी का मतलब होता है standing alone. It's an adjective. Okay, तो अगर आप solitary use based industrial activity कर रहे हैं, अकेला सिर्फ industrial based activities पर ध्यान दे रहे हैं, तो वहाँ पर 6 product groups हैं जो कि जिन्होंने positive signs express जो कि दिखाए थे. उनके अलावा कहीं पर भी ऐसा कुछ पॉजिटिव नहीं है, इसलिए ये जताता है कि भाई कैसे हम ड्रॉप डाउन हो रहे हैं. Further, the writer tells us that the growth in consumer non-durables, it includes essential household consumables, slid back to 6.7% from preceding month's 14.3%, betraying, that is cheating और धोखा देते हुए, the abiding weakness. Abiding means ongoing और कोई ऐसी चीज़ जो कि it is still there. Standing by, किसी चीज़ के साथ खड़े रहना, साथ होना या सपोर्ट में होना. तो क्या वीकनेस उनके साथ खड़ी हुई है इन प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग, उसको आप बिट्रे कर रहे हो. ओके, आप बिट्रे नहीं कर रहे हो, वो बिट्रे हो गई है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक. लोगों का जो रिएक्शन रहा है, तो जो कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स हैं जिसमें हाउस होल्ड के भी इसेंशियल कंज्यूमर्स आते हैं, वो भी रिड्यूस हो गया है. राइट, तो अगर आप प्राइवेट कंजम्पशन की स्पेंडिंग की बात करते हैं तो उसमें भी वो चीज़ अब बिट्रे हो गई, क्योंकि ऐसा लोगों ने इसका सोचा नहीं था. The other 5 groups posted double-digit contractions with consumer durables and capital goods shrinking 23.6 and 22.8% respectively. So consumer durables जो कि need है वो भी shrinkage उसमें भी है. If the trend in durables attests to the RBI's evaluation last month that private consumption has lost its discretionary elements across the board. Discretionary is an adjective which means available at
द डिस्क्रिशन ऑफ द यूजर, ऑन डिमांड जैसे आप कह सकते हो। तो वो जो प्राइवेट कंजम्पशन है उसने भी अपना सारा का सारा जो भी डिमांड था वो खो दिया है। The capital goods data point to a dismal picture. Dismal मतलब it's an adjective which means upsetting, दुख से भरा हुआ, निराशाजनक, निराशाजनक, that is dismal. Picture on the investment front. With demand-starved companies operating their factories with below capacity, there's little indication that the protracted 6-quarter slump, protracted, that's prolonged, that is extended, stretched, बढ़ता हुआ, ओके, जो बढ़ता ही जा रहा है, स्लम, स्लम मतलब डाउनफॉल, इट्स अ नाउन। गिरावट, हिंदी में हम क्या कहते हैं, गिरावट। In this sector, which encompasses the plants and machinery that manufacturers order when expanding or starting ventures, is anywhere close to reversing momentum. तो भाई अगर ऐसे जगह पर जहाँ पर यूजुअली नए वेंचर शुरू होते हैं और इस जगह पर भी फैक्ट्रीज के तौर पर जहाँ पर हम प्राइवेट कंजम्पशन की बात करें, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें, वहाँ पर भी अगर स्लम्प है तो दैट इज डेफिनेटली अ रिवर्स मोमेंटम दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग. Electricity generation, however, provides some relief with the contraction narrowing to 2.5% in July from June's 10%. तो उसकी इधर थोड़ा सा relief है. Moving ahead, a deeper look at the 23 subcategories of manufacturing shows that only tobacco products and pharmaceuticals posted expansions in July, with the latter benefiting from the increased global demands for medicines and including generic drugs in the wake of pandemic. भाई in the wake of pandemic के चलते चलते भाई pharmaceuticals का तो बहुत फ़ायदा हुआ है, बिकॉज लोग डॉक्टर्स के पास जाना प्रेफर नहीं कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं आप कह सकते हैं, तो वो खुद ही मेडिसिन प्रेफर करें. तो जो रेगुलर एंटीबायोटिक्स हैं या जो सिंपल मेडिसिन हैं, जनरल जो ड्रग्स हैं, जेनरिक ड्रग्स हैं, वो खुद ही जाकर दे कैन जस्ट गेट इट फ्रॉम द like pharmacies. The manufacture of pharmaceuticals, medicinal, chemical and botanical products climbed climbed 22% in July, making it the solitary product to post an expansion of 1.8 over April and July. मतलब ये एक अकेला प्रोडक्ट था. Solitary is an adjective which means all alone. So ये एक अकेला प्रोडक्ट था जिसने की एक्सपेंशन दिखाया, जिसने की ग्रोथ दिखाई. Textiles and garment manufacturing, employment extensive segments shrunk to 14.8% and 28.7% respectively. तो यहाँ पर भी गिरावट है. लोग कहीं जाएंगे तो कपड़े को क्या करेंगे? To be sure, the IIP data come with a lag of 6 weeks and few more recent indicators give room for some guarded hope. किसी तरह की थोड़ा सा रे ऑफ होप, बहुत ही कम आशा है. For one, the latest IHS Market India manufacturing PMI survey-based outlook signals that the sector likely posted some expansion for the first time in 5 months in August. And automakers reported growth in shipments of passenger vehicles to dealers last month in anticipation of. Anticipation is noun which means sambhavana, like possibility of festive season demand, still to help sustain any incipient revival. Incipient is a noun. Okay, here it's used as an adjective क्योंकि ये revival को qualify कर रहा है. Incipient means beginning, कहते हैं ना शुरुआत या शुरुआती. तो अगर रिवाइवल की बात करें तो वो शुरुआती दौर में हो सकता है. द सेंटर विल नीड टू इनैक्ट डिमांड सपोर्टिव फिस्कल पॉलिसीज और रिस्क सीइंग द स्लो डाउन प्रोलॉन्ग. कहते हैं कि या तो आप डिमांड स्पेसिफिक पॉलिसीज लाइए या फिर आप रेडी रहिए ये रिस्क उठाने की कि जो स्लो डाउन है इकोनॉमिक ये और लंबे समय तक चलेगा, प्रोलॉन्ग रहेगा, एक्सटेंडेड रहेगा. सो भाई देखो, जैसे फेस्टिव सीजन डिमांड था तो उन्होंने क्या किया भाई, पैसेंजर व्हीकल्स भेज दिए डीलर्स को
राइट, उस तरह से डील कर रहे हैं। तो जो आपको मार्केट डिमांड दिख रही है, हमें वैसे ही एक्ट करना होगा, वैसे ही प्ले करना होगा। यू कांट प्ले फास्ट एंड लूज एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, एट दिस क्रूशियल पॉइंट ऑफ टाइम। दिस इज व्हाट द राइटर हैज, एंड like I would say the suggestion that the writer had with him or her. So this was the article for today, and these are the words that I had to discuss with you for today. And the word that I want you to focus would be incipient. It can be used as an adjective and as a noun both, and it means beginning. Use it in a sentence, try to put it into use and frame your own sentences, and let us know in the comment section. Any doubts, you can write to us. Also, the list of the words for today are there on the site in the study material section. Kindly go, check, revise and practice. Keep learning and growing, as I always say, and not to forget to hit the like button to the video. Also subscribe to the channel for regular sessions with us. Thank you so much.